कोई कोई स्टॉक थोड़े से नीचे भी गए। Hi everyone, are you able to hear me out? Every one of you? I'm recording live from, yeah, I've not started the screen sharing, just give me a second. दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे रिसोर्ट से Cloud9 से थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है so I'm just trying to set up things and if you can bear with me and people on YouTube, you also, I'm just trying to be playing it from my resort here. So I'm just trying to figure out if everything is fine, if you are able to hear me. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, just give me a second and let me just set it up for you all. Just a second. Hi everyone, Ashish Kyal here and welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. This is Friday at 5 क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था, मेरे रिसोर्ट पे हूँ, Cloud9 हिल्स रिसोर्ट। एंड अगर आप मेरे साथ कोविड टाइम से जुड़े हुए तो आपको पता होगा 2020 में वी हैव बीन there. I was there for almost 6-7 months and enjoying. So the weather is really amazing here. I'm really loving the weather, enjoying it here. And सोचा मैंने क्यों ना यहीं से live करते हैं. Markets are going up and down, so it's very important for me to come and talk to you, talk to every one of you. So दोस्तों, before I move on, very quickly. Thanks for joining in and it's great to have you all here. I'm sure people on YouTube are also watching this. Do not forget to like, subscribe the channel and अपने comments share करना ना भूलें. And if you want to join me on the Zoom platform, I'm just sharing the link very quickly with you all. So ensure you are joining me on the Zoom platform as well. Here are link दोस्तों. So Zoom पे join करिए so that you can participate in all the polls and everything that we are doing as of with respect to market. So great to see you also, Shalini. It's always pleasure to have the master participants here. Pleasure to have you, Nikunj, Mehul, even Sanjeev. It's great to have you also here. So it's always wonderful to get the Gurukul participants on the platform. And यहाँ पर connectivity issue हो सकता है दोस्तों, but बने रहना, डटे रहना, because I'm doing it from my resort Cloud9 which is in Lonavala और weather बहुत खराब है दोस्तों, तो हो सकता है आप शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए. And if you are able to hear me out clearly, then just put it across. And market की बात करते हैं very quickly. Are you riding with me all the way? आपको पता होगा 23,560 का जब लेवल ब्रेक हुआ था, we are riding from there, and 24,728 का गेयर लेवल I've been talking about, and it's finally achieved at that level. वहां से निफ्टी ने ऊपर गया और वहां से कुछ रिवर्सल दिखा रहा है, मतलब वहां पर आके सस्टेन नहीं कर पा रहा है. एंड आने वाले वीक में बजट भी है. सो एक चीज और है, वी कैन ऑल, आई एम आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बजट के बारे में. जस्ट गिव मी अ सेकंड. अब जस्ट अ सेकंड. यहाँ पर अगर बजट की स्ट्रेटेजी देखे जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए कॉल का प्रीमियम भी काफी बढ़ा हुआ है, इवन इफ इट्स 1000 पॉइंट्स अवे. पुट का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, इवन इफ इट्स 1000 पॉइंट अवे. एंड द बिगेस्ट पार्ट अबाउट currently is that there is a lot of speculation that there is going to be something related to futures or derivative market, futures and options,
एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। तो गुंजाइश है टैक्सेशन पे लेके, गुंजाइश है मार्जिन को लेके, लॉट साइज को लेके। सो समथिंग might come up that is the that's going to add to the liquidity, that's going to reduce the liquidity. That's the challenge we can clearly expect in the coming week on 23rd July. So दोस्तों बहुत संभल कर ट्रेड करना है, because अगर liquidity dry out होगी सिस्टम से after the announcement तुरंत नहीं होगी, because they will have a timeline by when they are going to implement those, but it's going to be definitely not a good thing to do if at all they come out with some taxation for derivatives trader। बहुत सारा इम्पैक्ट होगा, लिक्विडिटी मार्केट से कम होगी, लॉट से एक्सचेंज किया तो भी होगी। सो देखते हैं, स्पेकुलेशन है क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं किया तो अच्छी बात है। सो यू नो फॉर मी दिस टाइम इन द बजट द क्लोजेस्ट थिंग इज how the derivative profits are going to be taxed across, because that's what I do, that's what most participants are doing। तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मार्केट की बात करें या क्लोज अगर आज का देखोगे तो डे लो पे क्लोज हुआ, एक भी आवरली कैंडल डिड नॉट क्लोज अबाउट द प्रायर कैंडल्स हाई। सो द ओवरऑल ट्रेंड बेरिश, एंड आई एम श्योर यू माइट बी एबल टू सी दैट ड्यूरिंग द डे। मैं चार्ट भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। एंड टाइम साइकिल वर्क फैंटास्टिक। How many of you have been there with me on the last Saturday master class जो हमने की? Last Saturday we derived the time cycle and we looked at Nifty, Bank Nifty, और Bank Nifty का एक cycle था दोस्तों, which was on 18th of July morning, I think 11:30 के आसपास था। And from there, Bank Nifty showed a move of 600 points on the upside. It was fantastic. So उसके बारे में तो हम डिटेल में वीकेंड पे बात करेंगे in the Kyal Chakra, and it's going to be an amazing session। Glad to know Naveen is already a part of it. There are many of you who are part of the Kyal Chakra program। It's going to be there from tomorrow, which is on 20th July 2021, 10 AM to 4 PM। दोस्तों रेडी रहना उसके लिए, उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। Let us just move forward and let me share across my chart very quickly with respect to wave count, with respect to Gann level, and क्या लग रहा है यार यहाँ पर हो क्या रहा है। So I'm going to talk about it in a very detailed fashion। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे निफ्टी और क्यू है, और आज का ट्वीट पहली बार मैंने क्लोजिंग के वक्त ऐसा ट्वीट किया यार, मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, बिकॉज यार अभी मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है मार्केट में, बट अभी तक 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से रिवर्सल नहीं हुआ है। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वेरी क्विकली विद यू ऑल, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा चार्ट आप देख पा रहे, तो मुझे एक हेड्स अप दीजिए, मुझे कंफर्मेशन दीजिए if you are able to see my screen। every one of you, are you with me? So you have to be high on जोश यार, पैसा बनेगा मार्केट में अगर लीडर होके ट्रेड करोगे तो। ओके, सो यहाँ पर एवरीवन जो लिंक है प्रोड्यूसर साहब अभी नहीं शेयर करेंगे, बाद में थोड़े टाइम पे आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। सो विल शेयर इट अक्रॉस इन सम टाइम। लेट मी टॉक अबाउट द चार्ट फर्स्ट। ओवर हियर इफ यू आर सीइंग दिस चार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। एक चैनल में आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ, कल हुआ, कल के दिन में 18 जुलाई को एक बहुत बुलिश कैंडल बना एंड मार्केट डे हाई पे बंद हुआ। सो वो देख के लगा कि, और वो भी साइकिल के पीरियड से, अगर आप फॉलो करते साइकिल पीरियड 43 का, सुपर चला। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज फॉलो अप होना चाहिए। सो एंड लेकिन मुझे ये भी पता था मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा 24/7/28। बट वंस मार्केट ओपन एंड वी स्टार्टेड सेलिंग अक्रॉस द फर्स्ट आवर के बाद में वी ब्रोक द डेज लो। नाउ दैट वाज अ साइन ऑफ कंसर्न, यार फॉलो अप नहीं आ रहा, बाइंग नहीं आ रहा, एंड ये चैनल भी था। एंड बाय द क्लोजिंग वी एंटर्ड बैक विद इन द चैनल। ये जो चैनल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर हम एंटर हो गए वापस। तो मतलब कौन से चैनल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाले लेग की बात कर रहा हूँ। सो इफ यू आर सीइंग दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेग। एंड यहाँ पर अगर हम वेव काउंट की बात करें, दिस इज वेव जी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग is going on or maybe completing, who knows। We started rallying with the election, are we going to terminate with the budget? देखते हैं, बहुत जल्द है। This is too soon to conclude that, but you have to look at this chart। So what I am trying to show you here is, right now I am showing you a chart which is of Nifty। यहाँ पर अगर आप देखोगे, Nifty is at the channel resistance, ठीक है, and
break above Gann level of 24,728 is extremely important. If extremely important, अगर यहाँ से reverse हुआ, also we have already achieved. अगर आप देखोगे wave G का target, we have already achieved the target as per wave G. So is it time to ride on downside? That's the question. Is it time to ride on downside for the budget or on the budget? Or budget, are we going to form call put strategy? What are we going to do? यहाँ पर call put लेना है हमें, नहीं लेना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी. So यहाँ पर अगर आप देखोगे, we have reversed from that G line यहाँ पर, and you can clearly see after that we are moving on downside, but we have not reversed as per the 3 candlestick rule. और मंडे को लूनार साइकिल भी है, वो भी ध्यान रखना दोस्तों. मंडे को पूर्णिमा है, अगर किसी को पता नहीं होगा, एवरी लूनार साइकिल वी हैव रैलीड. So this time it's going to be important. If on Monday we are going to move back on the down, nearly 36 days. तो मतलब ये साइकिल टॉपिक जोन में आ चुका है, चैनल रेजिस्टेंस पे आ चुका है. तो लग ऐसे रहा है यार बेस्ट ऑफ द मूव इज ओवर, ठीक है, एंड यहाँ से शायद रिवर्सल मिल सकता है. तो अगर रिवर्सल मिलेगा तो यहाँ से ट्रेड नेगेटिव बन सकता है, लेकिन अभी नहीं. लेट्स गो ऑन 1 hour chart and check. And if you apply the cycle theory correctly दोस्तों, you can even look at, this is 1 hour chart. And let me just clear off the screen here, ये भी मैं निकाल लेता हूँ. यहाँ पर अगर हम देखेंगे, we have completed just a second, we have completed wave C, we have completed E, we might have completed wave E, and this can be wave F on the downside. That is what we are seeing. यहाँ पर जो लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे का, वो लेवल है 24,140. Okay, this is the last rising segment. If Nifty breach this 24,140 on the budget day, so budget day strategy क्या होगी? 24,140 is very important for me दोस्तों. क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है 24,140 is the level that you have to keep a watch on. If this is retraced in faster time as per the new wave concept, then something is going, something is changing. ठीक है, that's what I want to see. अपसाइड का जो हर्डल निफ्टी के लिए जो हाई बना है अराउंड 24,800 के आसपास. लेट्स सी द एग्जैक्ट हाई दैट निफ्टी मेड वाज 24,854. सो 24,860. तो कौन से लेवल्स को ध्यान रखना है दोस्तों? 24,140 नीचे में थोड़ा सा नीचे देखे 24,140 इज व्हाट आई विल कीप अ वॉच ऑन यहाँ पर. एंड ऊपर में I'm going to keep a watch on 24,860. ठीक है, तो ये दो लेवल का आपको ध्यान रखना है. If this is the range I'm expecting, possibly on Monday we might move within this range. बजट के पहले मार्केट will not do much, it will move within this range. और अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस का प्रीमियम काफी हाई है, खास करके जब इलेक्शन के वक्त क्या हुआ तो पीपल आर ऑलरेडी नर्वस. ठीक है, और मैं भी हूँ यार, बिकॉज अगर पुट बेच रखा है तो जो हिसाब से इलेक्शन में हुआ था, आई डोंट वांट टू बी in the situation where I get trapped. So I'm going to play very decent. So what should be your strategy? Your strategy for the budget is going to be very simple. These are the two levels, 24,860 और ये 24,140. If Nifty breaches any of these levels, you have to play in the direction of that trade. Scalping type of trade, and you have to book out very quickly and stop loss लगा. ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, इसके बीच में रहता है,
तो हो सकता है ऑप्शन प्रीमियम रिटॉर्ट। मेरा ये मानना है यहाँ पर एक ट्राइंगल शायद बन सकता है विद इन दिस पॉसिबल रेंज के बीच, सो वी कैन सी अ ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो कहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन विद इन दिस रेंज, एंड बजट पे ये लेवल्स कौन से ब्रेक होंगे वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल डिसाइड द ओवरऑल मूड ऑफ द मार्केट। सो वंस वी रीच दिस लेवल, आई एम गोइंग टू बी ट्रेडिंग वेरी एग्रेसिवली इन दैट डायरेक्शन। तो कौन से लेवल है? निफ्टी 24,860 and 24,140 will set the tone for trading on the budget day. Budget day पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Basis of breach of these levels, the wave count will become absolutely clear. Okay, and is it time to buy puts or calls? वो क्वेश्चन मार्क है कि हमें यहाँ पे puts और calls बाय करना है बजट के लिए। यहाँ पर एक चीज तो है दोस्तों कि volatility is going to be very high. The volatility is going to be very high. यहाँ पर अगर आप बाय करोगे कॉल और पुट तो पैसा बनाना मुश्किल होगा। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी इफ यू आर गोइंग टू बाय कॉल और पुट हियर, बिकॉज यहाँ पर जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक और चीज है कि यहाँ पर ऑलरेडी विक्स बढ़ा हुआ है। अगर आप देख रहे हो विक्स ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और हो सकता है बजट वाले दिन पे वापस से विक्स और बढ़ जाए। सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी बाय बाइंग कॉल। सिंपल स्ट्रेटजी, ठीक है, हेज करके ट्रेड कैसे करना। अगर आपने कॉल बाय किया तो आउट ऑफ द मनी का कॉल बेच दो, पुट बाय किया तो और आउट ऑफ द मनी का पुट बेच दो। उससे क्या होगा, अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एंड दैट्स द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप स्ट्रैंगल बना रहे तो स्ट्रैंगल बना सकते हैं। ये रेंज ये तो बहुत छोटा रेंज है, you might have to look for a much broader range. So strangle में you have to hedge your position because movement can be very fast, or else put a stop loss. So there are multiple ways to do it. और साथ में टाइम को देखना, टाइम साइकिल इज गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक। So I'm looking at closely at time cycle. In fact, अगर आपने सुना होगा मैंने बात की, this was one of the best period when I have been able to trade the time cycle so damn accurately, which didn't happen before. So I'm going to show you a Bank Nifty 15 minutes time cycle. किन किन लोगों को देखना है बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल और नेक्स्ट साइकिल कब आ रहा है पता करने के लिए? Okay, there are many of you who wants to know. And दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, I'm just doing this webinar from Cloud9, live from there, and so you can see my commitment. So यहाँ पर I'm going to open up Bank Nifty chart, and Nifty is superb चला है, so I'm going to share that across also. Bank Nifty was like amazing, amazing. यहाँ पर let me just share my screen again. बहुत ही this is Bank Nifty chart. If you are seeing this Bank Nifty chart here, you can clearly see the low form here. Are you able to see my screen? Every one of you, Bank Nifty का chart time cycle के basis पे दिखा रहा हूँ मैं। Low form here, sharp rally. Low form here, sharp rally, and this is level 3rd. Look at the magic of time. Look at the magic of time. It was bang on, and from there, Bank Nifty rallied by 600 points. The next cycle of Bank Nifty is going to be here. 3 o'clock on 23rd July. That's very interesting. On the budget day, Tuesday को 3 बजे दोस्तों बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल। सो मैं लिख देता आपके लिए, दिस इज गोइंग टू बी ऑन 23rd of July एट 3, मतलब क्लोजिंग टाइम पे बाइंग आ रही है बैंक निफ्टी में। मेरे पास ड्राइंग पैड नहीं है दोस्तों, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग टू राइट इट डाउन। 23rd July एट PM. So I'm going to keep a close watch. If at 3 PM, if at all at 3 PM, we are going to getting a classic opportunity. So what is the strategy? Bank Nifty time cycle is going to reverse back on upside on 23rd July 3 PM, which is budget day.
will it work again? That's the question that you have to ask. लेकिन दोस्तों, as I always say, it has to be भाव भगवान से समय बलवान से trader पहलवान से. You have to combine all of methods together, and only if you are able to combine these methods together, you will be able to trade properly. अगर आपने ये methods को ठीक से combine किया, price action plus time, ये दोनों को combine करना है. तो ओवरऑल व्यू क्या है? आई थिंक बैंक निफ्टी में प्रेशर बना हुआ है अंटिल 23 जुलाई. ठीक है, एक चीज वो है. निफ्टी में ओवरऑल नर्वसनेस लग रही है, सो आई एम नाउ गेटिंग कॉशियस. मंडे को क्लोजिंग में देखूंगा क्योंकि हैव अ लूनार साइकिल एंड रेंज मैंने आपको वो रेंज में आपको प्ले कर, वो रेंज के ब्रेकआउट में वो डायरेक्शन में आप प्ले कर सकते. अगर आप सोच रहे हो नीचे का लेवल बहुत दूर का है, तो ट्विटर पे मैं मेरे शेयर भी करूंगा जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लेवल देख सकते. और साथ ही में दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले एक और चीज, मेरा एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है. अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मैं बहुत ही क्विकली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में. तो व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन करिए जिससे आपको अपडेट मिलते रहे. और अबाउट अगर ये क्यूआर कोड है, कैमरा निकालिए, स्कैन करिए और ज्वाइन. और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो गिव मी अ बिग थम्स अप. ओके, विनायक जी देयर इज सेइंग सर आई मेड अमेजिंग प्रॉफिट फॉलोइंग यू सिंस 1 मंथ. आई वांट टू बिकम टाइम ट्रेडर. तो अगर विनायक, अगर आप सोचिए, लिंक शेयर कर दीजिए प्रोड्यूसर साहब सबके साथ में व्हाट्सएप की. अगर इसके बेसिस, मेरे ट्वीट के बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट बना सकते हैं, तो अगर आप ये सीखेंगे खुद से, इफ यू लर्न दिस कंप्लीट साइंस इन टोटल, तो सोचिए कितना पैसा बन सकता है. तो कहने का अर्थ है दिस वर्क्स एंड इट कैन वर्क लाइक मैजिक. सो यू हैव टू बी विथ मी. दोस्तों आज के लिए यहीं पे व्हाट आई वांट टू आस्क यू, डू यू वांट टू बिकम द टाइम ट्रेडर एंड लर्न दिस साइंस ऑफ टाइम ट्रेडिंग अलोंग विथ? अगर है जवाब यस का आपके पास, तो देखिए हमारे पास थोड़ी सी सीट बाकी है काल चक्र के लिए, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. And my colleague is going to share across the link, because you are here with me in my webinar and been attending this for so long. So many hours we have taken, so many times we have been here. So ये final call, final opportunity to learn first time cycle, Gann square of 9, FLD का concept, centered bowling events, big special के ये सारी चीजों को हम combine करेंगे, KSG को भी करेंगे और डिराइव करेंगे ट्रेड राइट फ्रॉम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम तो 15 मिनट्स. ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बट यू हैव टू एक्ट नाउ. एंड वी विल बी हैविंग अ फॉलो अप सेशन आल्सो आफ्टर 10-12 डेज, जिससे आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी. यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द ट्रेडर्स फोरम वेयर आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक, एंड सो मेनी ऑफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. सो क्या करना है, you can simply go on the link which is shared by my colleague, and this is for people who are watching this video, only for them, because we are already full. We have few seats left and we will not be able to allow or entertain anyone else. अगर ये opportunity miss की दोस्तों, next opportunity you might not get it in 3 months, 6 months time, so I can't really help you there. So you have to be here, and let me just very quickly share across my screen. Brahmastra ka bhi, each of these techniques will be practiced live. Will be with me for 3 months, 4 months, where हम options को डिटेल में देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे. तो एक्ट करिए. This is your time and this is Brahmastra. I'm also going to take a very quick poll now. यहाँ पर पोल का ऑप्शन मैं देख लेता हूँ दोस्तों. करेक्ट. तो यहाँ पर मैं पोल ले रहा हूँ आप लोगों के साथ में. विच पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, काल चक्र या ब्रह्मास्त्र, नाम ही ऐसे रखे. सो these are the poll. Please participate in the poll and I'm open for any questions, doubts, queries that you might have. दोस्तों it's going to be amazing. 10 बजे तैयार है ना. 4 बजे तक का सेशन है, ऑनलाइन लाइव है, रिकॉर्डिंग की जाएगी. और साथ ही में just ensure that you will get a break also in between.
नॉट वरी, रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. अगर आज रजिस्टर कर रहे, यू विल बी ऑल्सो गेटिंग अ प्री सेशन वीडियो राइट नाउ. एंड वो वीडियो में आपको कुछ सारी चीजें एक्सप्लेन होगी, बेसिक 1 आवर का है. एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर. ओके, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप. लेट मी जस्ट चेक. एंड पोल में पार्टिसिपेट करते रहिए दोस्तों. आई हैव जस्ट स्टार्टेड द पोल. शीतल इज आस्किंग सर, आई एम अ फ्रेशर. आई गेट दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स कि आप फ्रेशर हो, क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं ना, वो किसी ने किया ही. इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट आपको चार्ट पता होना चाहिए कि चार्ट क्या है. एंड यहाँ पर तो आप कर पाओगे. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. Okay, the another question is, sir, if I join Brahmastra, can I attend tomorrow? Yes. So Brahmastra includes Kal Chakra, Sutra of Waves, mentorship sessions होंगे, live sessions होंगे, algo creation होगा, stock selection, which I used for winning 29 times on Khiladi number 1. So वो सब होंगे. So you can register for Brahmastra if you want to. Brahmastra का भी लिंक शेयर कर दीजिए प्रोड्यूसर साहब सबके साथ में. एंड यू कैन ऑल्सो पे फॉर ब्रह्मास्त्र एंड ब्लॉक योर सीट्स. अगर ब्रह्मास्त्र नहीं करना है आपको, कल परसों की जो ट्रेनिंग है वो करनी है, सो यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर दैट ऑल्सो. देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर. EMI option for Brahmastra is possible. You can share the EMI link also, and that is possible for that. What is there in Hurst and cycle? See, J.M. Hurst was an aeronautical engineer. He developed certain methods to look at price and time. ये दोनों चीजों को देखने का उन्होंने एक मेथड बनाया. And basis of that method, I'm going to teach you how to apply it on Indian markets. And it works super. It can selling. Price target भी निकाल सकते, forecast time, price using time. Okay, so वो भी कर सकते हो. So it's a simple science which I'm going to teach you, and it is easy. अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो. You don't have to worry at all. There is another question here. Sir, I have registered for Kal Chakra. Fantastic. So it's great to have you here on boarded, Bhavan, for the Kal Chakra program. It's fantastic to have you for Kal Chakra. Great to have you here. And I can see, sir, I'm registered for Kal Chakra. Okay, Deepta, once you register, just confirm back to me so that my team can set up all the access. So don't worry of that. If you are a part of this, you are a part of Gurukul. And once you are a part of Gurukul, you don't have to worry. Sir, ये हिंदी में है इंग्लिश? It's going to be in both. ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा दोस्तों. So don't worry at all. अगर आपको ये वेबिनार समझ में आया, then definitely you will understand this also. Any other questions, guys? I can see poll में participate कर रहे हैं. And people on YouTube, do not forget to like, subscribe, and share across your comments also. Recordings will be given to you. Yes, Neha, you will get the recordings also. So don't worry on that. आपको 1 महीने के लिए recordings भी दी जाएगी. And if you have any questions, doubts, you can ask me. There is another question here from Anand. Sir, can I apply it on just a second options? Yes. See, options में सबसे ज्यादा important होता है दोस्तों टाइम करना. और मार्केट को आप टाइम कर पाओगे अगर आपको टाइम साइकिल पता है. और ऑप्शंस में आपने देखा होगा अगर सही टाइम पे टाइम किया तो बात ही कुछ और है. सो मेनी ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जनरेट दैट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, ये ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, यस, दिस इज फॉर यू. यस, इट इज एप्लीकेबल ऑन स्टॉक्स आल्सो. यू कैन डू इंट्राडे ट्रेड. हम 5 मिनट पे अप्लाई करेंगे. मैं आपको एक एक्सेल शीट दूंगा. Gann square of 9 के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में, where you will learn these concepts in much detailed fashion. हम Reliance, Infosys, TCS stocks पे अप्लाई करेंगे. Gann levels, time cycle right from 15 minutes to 5 minutes. We'll do that in the simplest possible way. So दोस्तों टाइम नहीं है ज्यादा. If you want to act now, because then we have already stopped registration. But मैंने मेरे कलीग को बोला कि यार थोड़े लोगों का मैसेज आ रहा है that they still want to be a part of it. So I thought webinar कर ही रहे, तो let me
be a part of it. Okay. Varun has registered. Thanks for sharing that across. Varun has registered. Sheetal is onboarded. Deepak has registered earlier. Fantastic, Deepak. There are many of you, I'm sure. और दोस्तों सबके क्वेरीज को मैं अभी आंसर नहीं कर पाऊंगा. And I'm going to answer it. Tomorrow we have limited seats only, so I'm going to do that. Awesome guys. So वापस मिलेंगे. बजट की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है and it's going to be amazing. आज के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद. I want to save my throat for tomorrow and day after, which is on 20th, 21st July online. Kyal Chakra. I'm sure you all are excited like me. I'm excited to share my learnings to each one of you. Have a wonderful time, guys. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off. Thank you very much. Yes, there will be support that will be given to you, so don't have to worry about it, Mahesh. You will be getting the support. You can post it on Traders Forum, as I said, or you will be able to do that, so you don't have to worry at all. And I'm just opening up a QR code for the poll also on the YouTube, just in case there are people who haven't participated in the poll and want to do that. ये QR code भी मैं फिर से share कर देता हूँ for many of you who have not been able to participate because YouTube पे poll नहीं run किया था, but you can participate by just take out the camera, click on the link, and you will be able to participate in the poll also. Okay, so you'll be able to do that. We do not have an online, we have only online, Mahesh. So you will have to be with me for that. And Time Machine, you have joined yesterday. Fantastic to have you also on board for this program. It's amazing. Fantastic. So ये QR code है. You can just click on it. And people on YouTube, you can also simply click on the link in the comment box in the description if you want to be part of it. It's going to be an amazing learning. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. And Mahesh, okay, you have taken Om and Sutra waves also. That is awesome. Do come to Cloud9 Lonala sometime if possible. So chaliye, let's just end up here. Thank you very much for joining in, guys. It was wonderful to have you all here. And if you have any questions, my team will always help you out. Share kar dijiye number, contact number. You can always contact us on 99204-22202. Thank you very much, guys. Have a wonderful time and become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.